के माध्यम से what kind of challenges are facing the judiciary, what kind of challenges are facing the constitution. Have things gone according to plan as to what the constitution makers thought in 1949? The answer is no. But has the constitution failed? Again, the answer is no. The constitution has not failed, we have failed. The readers of the constitution, the humans of the constitution have failed. देखिए बात समझिए मैं क्या कहता हूँ. मान लीजिए आपके पास कोई इक्विपमेंट है, मान लीजिए एक रेनकोट है, रेनकोट पहन के आप बारिश में जाते हैं और फिर भी भीग जाते हैं. ऐसा नहीं है कि रेनकोट खराब है, आपने रेनकोट को ठीक से पहना नहीं. रेनकोट खराब तब है अगर रेनकोट के अंदर पानी घुस जाता है, रेनकोट में छेद है या रेनकोट के डिजाइन में फॉल्ट है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन. द रेनकोट इज परफेक्ट. आपने जिस तरह से रेनकोट पहना है वहां प्रॉब्लम. So the authors of the constitution have taken 3 years to decide, deliberate every single power, every single freedom, and over the years the Supreme Court has initiated several measures to ensure that newer and newer rights are created for the people. Our resources as the government have also increased over a period of time. जो चीज पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आती थी उनमें से बहुत सारी आज हमने फंडामेंटल राइट्स बना दी. फॉर एग्जांपल राइट टू हेल्थ, आर्टिकल 47 नॉट जस्टिसिएबल, बट पंडित परमानंद कटारा वाले जजमेंट ने राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट बना दिया, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को फंडामेंटल राइट बना दिया, राइट टू फूड को फंडामेंटल राइट बना दिया है अंडर आर्टिकल 47. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, उसके बाद सरकार ने एनएफएसए एक्ट ले आए हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013. Similarly, I can talk about right to information. ये लॉ बन गया है. लॉ बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर पीपल टू कैरी आउट देयर बिजनेस. राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन अकेली ऐसी चीज है जो तीनों भाग में, पार्ट 3 में भी आ गई है 21 कैपिटल ए 2002 में, इसमें भी आ गई है आपकी 45 में तो पहले से ही थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज पार्ट 4 बीपीएसपी, and it is also 51(a)(k in the fundamental duties. ये तीनों जगह है. Right to education is now very very important. तो शिक्षा के बिना तो आप तो कुछ भी नहीं. So then this whole concept of PI कहाँ लिखा है Constitution में? Now this whole business of having social interest litigation, having litigation which is in the interest of the public. Now, this has come up because of interventions by the court, interventions by the Supreme Court. Society has demanded it. So you write a postcard. मजदूरों ने पोस्ट कार्ड लिखा सुप्रीम कोर्ट के जज को, उसको भी रिट पिटिशन PIL मान लिया गया, लोकस स्टैंडर्ड के रूल को हटा दिया गया. Purpose is to bring justice beyond the reach of the common man. Those people who cannot reach the courts on their own, those people who need some help, उनके लिए भी ये बना दिया. सो जस्टिस को हमें एक्सेसिबल बनाना है. अब आज की डेट में क्या जस्टिस एक्सेसिबल है वो हम थोड़ी सी बात करें. फ्री लीगल एड का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 4 में फ्री लीगल एड का. नाउ should we be using the courts etc for fora of justice, or should we be using the courts as fora to stop people from coming to court? ये थोड़ी सी हम आगे बात करें. Cost alone is not the only factor. Language is also. So मैं आपसे दोनों भाषा में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी बात कर रहा हूँ, हिंदी में भी. Courts have been using only English as a language in the high court system. This also creates a problem. So now Supreme Court says that no, you can argue in the local language. Now slowly you will start seeing even judgments people will start writing in the regional languages. Supreme Court has started making available their own judgments in 9 regional languages. According to me, ये बहुत बड़ी चीज है कि भाई आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है या आपकी इंग्लिश कमजोर है, तब भी आपके पास जस्टिस या लॉ या कुछ भी आपके पास पढ़ने का you have the systems. डिले की हम बात करें, जुडिशरी में जो डिले है, जो बैकलॉग है, इसकी हम थोड़ी सी बात करें. जब तक ये नहीं होगा आपके जो है जस्टिस विल नॉट बी एक्सेसिबल. आप लाख कोशिश करते हैं विदाउट द ह्यूज बॉटलनेक्स. आज की डेट में 4 करोड़ प्लस केसेस, तो इसकी हम थोड़ी सी बात करें. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आपसे मैं आज बात कर रहा हूँ घर बैठ के,
इन सब चीजों का यूज होना चाहिए. यू कैन एंड ब्रिंग डाउन डिपेंडेंसी एज फार एज पॉसिबल. टेक्नोलॉजी का यूज करिए, अगर हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करिए. यंग जनरेशन जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के अपने आइडियाज हैं, अपने उनको यूज करना चाहिए. So I just want to talk a little bit about pendency because that will set the tone for the discussion further. Friends, as we speak, I am quoting from the National Judicial Data Grid, and you can see from your phone, NJDG. 4,26,91,651 मामले भारत में लंबित हैं. 4,26,91,600, out of which 3,18 lakhs are criminal cases and 1,08 lakhs are civil cases. तो हमने ये देख लिया कि 75% से ज्यादा मामले जो लंबित हैं ये क्रिमिनल के मामले हैं. अब इनमें से एक साल से ज्यादा लंबित मामले 61% है क्रिमिनल और 60% है लगभग बराबर सिविल. सो लगभग 60.5% मामले एक साल से ज्यादा लंबित. 20 साल से ज्यादा लंबित मामले हमारे यहाँ आज की डेट में 20,000 मामले हैं जो 30 साल से ज्यादा लंबित. Do you think justice has any value? And mind you, this is the original case. उसके बाद आप अपील में जाएंगे, फिर रिवीजन में जाएंगे, फाइनली सुप्रीम कोर्ट में. जस्टिस का क्या मतलब रह जाता है 30 साल बाद? 30 साल इज मे बी 1.5 generations. 1.5 पीढ़ी के बाद जस्टिस का क्या मतलब है? 20,000 से ज्यादा मामले आपके पास लंबित हैं 30 साल से ज्यादा. 22,000 मामले ऐसे हैं जो 20 से 30 साल तक. इसका मतलब करीब करीब 4% मामले ऐसे हैं जो मोर देन 20 इयर्स से ज्यादा लंबे, और उसमें से 16 और 12 28,000 मामले आपके क्रिमिनल साइड. So see the position, friends. Everywhere you are seeing that the position is that the dependency is extremely high. एक अकेले राज्य उत्तर प्रदेश की हम बात कर. उत्तर प्रदेश में 1,09,00,000 मामले लंबित. 1,09,00,000 मामले. 9 करोड़ तो क्रिमिनल के मामले, 9,09,00,000, और 1 करोड़ के आसपास मामले जो हैं वो सिविल के. So see, these are I have just read out to you certain important statistics which are there, which make justice very difficult. The other problem is the huge costs which have now arisen. The good lawyers, the kind of money they are charging in the Supreme Court for the cases, especially for the SLPs, etc., is running into several lakhs. How many people can afford it? And what kind of norm should be there for PILs? I leave it to you to think about it. The Constitution, you have to, whenever you are discussing, आपको preamble से link करके बात करनी. We the people. So इसमें प्रधान चीज क्या है? भारत के लोग सबसे ज्यादा प्रधान. अब इसमें आप बात करिए, एक जो हमेशा टॉपिक रहता है जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आई है, हम भारत का अगर देखें, from 1950 to 1973 we have seen that there has been conflict between fundamental rights and DPSP. ऐसा नहीं है कि DPSP गलत है, ऐसा नहीं है कि fundamental rights गलत हैं, but fundamental rights by their very definition, fundamental rights by their very definition, fundamental rights must prevail over everything else. अब ये पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में स्ट्रगल चला, आपने देखा शंकरी प्रसाद रहे, सज्जन सिंह का केस हुआ, गोलकनाथ का केस हुआ, फाइनली केशवानंदा भारती का केस. एंड केशवानंदा भारती का केस में the 13 judges of the Supreme Court, highest ever, have come together and decided that look, this is the fundamental rights you can amend, but you cannot tamper with something called the basic structure. Now basic structure जो है ये concept constitution में कहीं. ये सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके पास पावर है 142 में, ये बहुत नए नए कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने इजाद कर कॉन्स्टिट्यूशन को संभाल के रखने. नहीं तो जिसके भी पास मेजॉरिटी होगी, आज भी देखते हैं आपकी मेजॉरिटी रूल हो रहा है, आप 70s में भी देखते थे मेजॉरिटी रूल. जिसके पास भी मेजॉरिटी रहेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज करेगा. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, अमेंड करना ना तो बहुत मुश्किल होना चाहिए और ना बहुत आसान होना चाहिए. It should neither be very easy to amend, nor should it be very difficult to amend. If it is very difficult, then you will keep having revolutions.
And amendment of the constitution is a way of having a bloodless revolution. और अगर आप बहुत आसान कर देंगे तो रोज कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, जिसको जो सूट नहीं करेगा अगर मेजॉरिटी है वो चेंज। सो दे हैव कम अप विद सेफगार्ड्स, और उसके बाद से ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बीइंग वन ऑफ देम, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बीइंग वन ऑफ देम, secularism being one of them, these are being held to be, and so many other things, republican and democratic forms of government, they have been held to be the parts of affirmative action has been held to be, they are parts of the basic structure. Now recently a judgment has come saying that the EWS reservation may be cut. देखिए सही गलत you have to decide on your own, but has it been decided? What were the things that were kept in mind while deciding? इसको क्या क्या चीजें सोची? अब एक तरफ तो EWS की लिमिट कुछ बताते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि इनकम टैक्स की लिमिट कुछ है, EWS की लिमिट और ओबीसी की लिमिट कुछ बताते हैं। तो कितना व्यावहारिक ये है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 9 जजों की बेंच ने इंदिरा साहनी में कहा हुआ है कि नहीं साहब आप इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते, तो 5 जजों की बेंच कैसे परमिट कर रही है इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन? ये कुछ आज की डेट में नए इश्यूज पैदा हुए हैं, एंड सो आई थॉट इन पे आपकी थोड़ी सी बात। नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात इंडियन I'm sorry, I got disconnected. Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. I'm sorry. So I was just telling you about the problems and the challenges which are to you. आपको मेरी अभी आवाज ठीक आ रही है? Yes, sir. Excellent, thank you. Please let me know, because these are the vagaries of technology. So please let me know if there is a problem. I'll save bandwidth by turning if required. Okay. So the Indian judiciary is unique. The appointment process is unique, and all of these things, friends, have been done to ensure that the judiciary remains free from executive influence. See, in your constitution, there is a very important provision, friends. Article 50. It is in part 4. Separation of executive from judicial. अंग्रेजों के टाइम ऐसा नहीं होता. The same person was exercising judicial functions and the same person was exercising the administrative. They have put it. They said, look, हमारा गोल ये है कि हम अलग अलग करना चाहते हैं, बट हमारे पास आज की डेट में फंड्स नहीं है, इसलिए हम जो है इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखेंगे, इसको जस्टिसिएबल नहीं बनाएंगे. So over a period of time, they acquired funds, and then in 1973, in the new CRPC says that no, this whole concept must change. In fact, Law Commission has repeatedly said from 1973 onwards that please stop using the terminology district magistrate and subdivisional magistrate, because you don't have magistracy powers anymore. But in states like UP and Bihar, you will find they continue to use these terms. Others have stopped. They call the person collector or deputy commissioner or something like that. You find in Delhi or in Himachal or in Haryana or Punjab or Tamil Nadu, they're not using the word district magistrate. So these things have been done ताकि आप उसको अलग रख सकें. अच्छा, 1950 से लेके 1973 तक ये प्रॉब्लम नहीं आई. 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर केस आने के बाद, जैसा कि आपको पता होगा, जज नंबर 1 रिटायर्ड, द चीफ जस्टिस सीकरी, द डे ऑफ द जजमेंट, 24th April 1973. Number 2, 3, 4, Hegde, Shelat, Grover, they were on the side which says Parliament can amend subject to basic structure. So these basic structure judges were bypassed, and the judge who was number 5 was appointed.
The same thing happened in 1976-77 when Justice H.R. Khanna, who decided against the election of the then Prime Minister and who also was present in the basic structure case and a lot of other such cases, ADM Jabalpur also, um, he was again bypassed. So now the judiciary has started from S.P. Gupta in 81 and then the Supreme Court Advocates of Records Association called the second judge's case in 94 in the presidential reference 1998. They have laid down that no, this will not happen anymore. The role of the executive from 1994 onwards, from 1998 onwards, in the judicial appointments बहुत कम कर दिया गया है. अब ये वर्ड कहीं नहीं यूज्ड है, बट कलीजियम बना दिया है. पहले 1+2 94 में, फिर 1+4 का कलीजियम बना दिया. Now this whole collegium is a judicial invention. ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, कलीजियम कहीं नहीं लिखा है, बट ये बनाया गया है जुडिशरी की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए. न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि you want that justice should actually prevail. Everybody is interested in having a system where justice should happen. हो सकता है सरकार को आज अच्छा ना लगे, बट लॉन्ग रन में सरकार को भी अच्छा लगे. तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे समय समय पर सवाल उठते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि collegium system has been there not only for the Supreme Court appointments or High Court appointments or transfer of judges from one High Court to another, but also for bodies like CVC, Central Vigilance Commission, Vineet Narayan case, and CBI. So CBI director का appointment कैसे होगा? There will be a committee of three. There will be a leader of opposition. If there is no leader of opposition in the Lok Sabha, single largest party leader, the Prime Minister and the Chief Justice. ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे सीबीआई डायरेक्टर कौन होगा. सिमिलरली सीबीसी एंड सो ऑन. अब बहुत दिन से ये केस चल रहा है, 24 साल से केस चल रहा है अबाउट इलेक्शन कमीशन. नाउ that how should the election commissioner be appointed or the chief election commissioner be appointed? Why is this important? The election commissioner and the chief election commissioner is very important because they are under Article 324 responsible for carrying out the entire process of democracy in the country, free and fair elections, which is part of basic. तो आज की डेट में ये बहुत टॉपिकल इशू है. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रोज आपको दिखेगा इस केस में न्यू इलेक्शन कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड. सुप्रीम कोर्ट से पे आपने कैसे कर दिया, प्रोसेस दिखाइए हमको, अगर सब कुछ ठीक है तो फाइल दिखाइए, आप क्यों घबरा रहे हैं, सो ऑन. ओके, सो अच्छा, न्यायपालिका ये सब करती है तो उस पे आरोप लगते हैं कि देखिए ये तो इलेक्टेड लोग हैं, इन्होंने कानून बनाया है, भारत की जनता ने इनको कानून बनाने के लिए बिठाया है, आप उनके बनाए हुए कानून को उल्टा कर देते हैं. तो इसको कहते हैं tyranny of the unelected. So how should this be tackled? So when this NJAC, friends, National Judicial Appointments Commission was made, Constitution Amendment was moved, 99th Constitutional Amendment was brought, and all the entire process 124, 217 and 222 dealing with appointment of Supreme Court judges, Chief Justice, appointment of High Court judges, Chief Justices of High Court and transfer of High Court judges. The entire process was sought to be changed. As per this amendment, an NJAC bill was signed, bill was brought. This bill was passed by both houses of parliament unanimously. Normally parliament में कभी भी कुछ इतने unanimously नहीं होता. लोकसभा में जितने आदमी प्रेजेंट थे सबने उस बिल को सपोर्ट किया. एक आदमी राम जेठमलानी ने अपोज किया. 37 आदमी एआईएडीएमके के आदमी, जयललिता की पार्टी के आदमी, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, एब्सटेन कर दिया. एक भी आदमी एक्सेप्ट फॉर राम जेठमलानी, नोबडी एल्स अपोज द बिल. अभूतपूर्व, भारत की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा that everybody is supporting the bill. It was passed by both houses. It was signed by the then president. It became law from 31st December 2014. The president signed. Now it was challenged before the Supreme Court. Supreme Court in 6th November 2015 has given a 5-judge bench saying that NJAC is constitutionally wrong by a majority of 4:1. They have given the various reasons that it is impacting the judicial independence in various ways. That how is the law minister a part of the
NJAC, how is the law minister going to appoint judges when he himself has an interest in the outcome of the cases? How is the law secretary going to be the shortlisting authority? Because the law secretary is going to do what the law minister is going to want him to do. How are the two eminent persons going to be selected? The two eminent persons have not got any law background. They are being selected by a committee which comprises the Prime Minister, Leader of Opposition, and the CJI. The veto power is given to the two eminent persons. The judicial component does not have primacy in judicial appointments because it is CJI plus two senior judges plus three outsiders. Outsiders being two eminent persons and one law minister. So these were various problems which were cited, by virtue of which this NJAC was rejected. I will come to my last topic, friends, and after that, if there are any questions after all the speakers have spoken, we can definitely discuss. My last topic, I want to speak to you about a little bit about religious freedom, and because this is again a very topical issue, many people have a lot of questions. Is it the court's work to interfere or to get involved in matters of religion, especially when it comes to, let us say, rights under 25, 26 or rights under 25. देखिए इन चीजों के आंसर्स बहुत जटिल, बहुत आसान नहीं. मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ. During the British time, they have not bothered about any of the religious matters. They have not bothered. They also desire that yes, uniform civil code hona chahiye. They are also saying. They tried initially. They got, I mean, people like Brahma Samaj, Raja Ram Mohan Roy, etc. They were able to get a lot of support from the British initially when they were trying to reform Hindu society. Similarly, the Muslim reformers got a lot of support initially from the British. But then, whenever there was attempt at religious reform, the community leaders started getting mobilized. And then the British said that, hang on, we as it is have enough problems in India. हम इन लोगों से और ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकते. हम यहाँ गवर्न करने आए हैं, इनका भला करने नहीं आए. They were very clear. So they kept religion at an arm's length. कहते भाई ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद निपटाइए, हमें इसमें नहीं पड़ना. So their attitude was not one of wanting to have religious freedom. As a result of which, at the time of independence, we had a serious problem. So yes, you are absolutely right, with Prakash. The attempt is again there to make the National Judicial Appointments Commission. My own personal view is that the NJAC, as it was made in 2014, अगर उसमें कुछ changes किए गए होते तो वो शायद सही ही होता. वो जो है, it would not have been struck down. Anyway, we can talk about that later. Coming back to religious freedom, देखिए ये जो after independence we had very serious problems. There was an urgent need to reform society, especially Hindu society, because caste was a major problem. And in fact, Ambedkar resigned as law minister from because of the Hindu code bill, and he had difference of opinion with the this is 1954. Correct. Ambedkar was India's first minister. So Hindu code bill in fact was parliament not by Ambedkar but by another minister. Law minister did not bring the bill because he had problems with what the bill was saying. Anyway, you can read about it or you can talk about it at some other event. But उस बैकग्राउंड से अगर हम केरला में सच में लॉयर पागल होते हैं भाई. जैसे ही आप उसको रिफॉर्म करना चाहेंगे सोसाइटी को, जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो कहेंगे नहीं कि हम तो अभी तक कर रहे हैं. Reform is always going to be problematic. Anybody trying to make any kind of reform will always run into problems. Politicians, because they have to go to the people for votes, they are generally very reluctant to do reforms. All over the world ऐसे ही. India में भी जो reforms जो LPG हुआ, liberalization हुआ 1991 में मजबूरी में. अब शायद मनमोहन सिंह जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री वो भी करना बिकॉज वो मजबूरी की बात. बिकॉज आपके पास गवर्नमेंट से सबसे हाईएस्ट वकील होता है, उससे आपको ऑब्वियसली चेंजेस करना गवर्नमेंट में कोई वकील नहीं. अगर वो इतनी खराब हालत नहीं होती तो शायद आज भी चल रहा हो.
The pollution is so bad, so now probably उसे appointment लेना मुश्किल काम होता Punjab है। and Delhi and Haryana will have to make some reforms about cropping patterns. So coming back here, now this started raising questions. Every time there was a change, it was challenged. That look, how are you changing our religious practices? So now people are becoming more and more vigilant. They have more access to information. Sabrimala case, friends, is a very interesting case. So here, what has happened is the matter has reached a bench of 5 judges, and one of them is a lady, and the other 4 are men. So the only lady judge on the bench, she says that no, women should not have a right to vote when they are in the menstruating age of 15 to 59. And the 4 other judges who are men, they say no, women should be allowed. Now Kerala government is opposing it. Union government is opposing it. So many other people are opposing it. But there is a section of people who say, there is a section of people, young people, ladies, etc., who say Indian young lawyers is the British, who are saying that नहीं ये तो ये जो position है कि आप allow नहीं करते हैं ladies को between that age group, ये गलत. Now the problems are not just limited to Hindu law. The same problems you will find in Muslim law. Muslim organizations are also opposing what you have done in the case of triple talaq. So whatever was done in triple talaq, whatever was done in the parliament to overcome the decision of Shah Banu, Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act, which was brought in by the Rajiv Gandhi government. So that also, so all of these things, they are being done for the purpose of balancing, I should say, or harmonizing, I should say, various aspects of the constitution. So, friends, I will just like to end my talk by saying that the constitution actually demarcates the roles of all 3 organs of the government very, very clearly. अगर हम constitution की लाज रखें, constitution के हिसाब से अपने काम करेंगे, तो आपको problem नहीं. The legislature has the job to make law. Courts are not supposed to make law, and that is why they don't make law. Whenever courts make law, like in the case of D.K. Basu or Vishaka, जब law आपके पास नहीं है, तब तो judicial vacuum है, तब शायद court को step in करना पड़े. But the moment legislature makes a law, be it in the case of NFSA, be it in the case of POSH, be it in the case of any other law, the CRPC amendments of 1987, CRPC amendment of 1987 आने के बाद डीके वासु का कोई मतलब नहीं रहता, पॉश करने के बाद विशाखा का कोई मतलब नहीं रहता, NFSA आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं स्टेट ऑफ राजस्थान वाले, वो PUCL वाले. So the judiciary's job is not to make only interpret law. The legislature's job is to make law, and executive's law is to implement. Executive's job is to implement law. अगर जो executive है वो ये सोचने लगी कि मैं लॉ बना दूंगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के नाम पे, या एग्जीक्यूटिव ये सोचने लगी कि हम जुडिशरी को बंद कर दें, ट्राइब्यूनल बना, that is not going to be proper. So end of the day, I will just wish you all the very best on the occasion of this great day, the Constitution Day. And once again, thank you very much to the organizers for having me. If there are any questions, we can definitely have it. Thank you. Thank you so much, sir. Your views and ideas are very informative for all of us. Now, I would like to invite Advocate Rishikesh Kumar, sir, to speak on this occasion. Am I audible? Yes, sir. Just try to switch on my camera. Yes. I'm sorry, I have just got into my car because I have to have just some other meeting. So basically what Dr. Parikshet has said, I will just add on all those points. And I assume that the students today are many of those who are interested in taking the litigation as their career. So I will more speak about the career prospect,
the kind of exposure that a student is going to get uh, after he passes through the law degree, and then there are many other questions that come up in the mind of the student. And after speaking a while, I'll just let other students to take a question answer session also, because it is more important. And also, I believe that when you have this kind of conversation, the conversation from the both the side, my giving some ideas or putting my ideas in view before you, but I also want to know about the questions and the queries from the students who are listening to me. So to start with, I would say that as per my experience when I passed through my LLB from the law faculty, I joined litigation from the trial court. I started my litigation practice from 30,000, working under one able senior at that time in the criminal law, Mr. Tanveer Ahmed Mir. And my experience is that in criminal law, when you join certain your profession as a litigation, then it is quite challenging, and it is not that easy to cope with the various circumstances that will come across you. And that first one is that at 9:30 in the morning you have to reach to the chamber of the your lawyer, your senior, and then start the day with 10 o'clock with the court. And I'm telling, maybe the other leg of the profession is corporate and other places also. But litigation has its own charm and challenges. Because initially when you start, you're going to the court, start appearing in the court and start facing the questions of the judges and reading the law as per the case is put before you. See, there are two aspects. First, when you study law, you read books, you get into the all the kind of research work, but that is only academic. It is when you started practicing, the real situation is put before you. The application of the law comes from there. Then you will realize that at this point of juncture, which law is applicable to what extent. So the first thing that one should know and understand, that reading books, reading the judgments, reading journals is good. It's a knowledge. You are gaining knowledge, you are acquiring knowledge. But when you go in practice, you are applying those knowledge in a practical situation. And it gives you much of interest, because sometimes you feel that there is a real situation before you. And there is a law that you have learned during the college time. And now you are putting those knowledge for solving a particular case. So this is called the skill. And this skill is very important in the litigation, and it is being acquired over the period of time through the regular practice. Then come the other facet of it, that somebody who is also into the litigation and want to go for career in the judiciary. So the people who start with the career saying that I'll go do litigation and then also simultaneously preparing for the judiciary, I have a suggestion for them. It is better that you should first prepare yourself, give some time, because when you are studying in the law college, you are very fresh with your the knowledge that you acquire through the books. And when you give an examination of the judiciary, then you are quite fresh in and using those knowledge. But after some time, when you are done with your the examination and all, but you sometimes you decide that now I have to switch it, then you can go for the litigation. I would suggest that you should continue for a 1-2 years and devote yourself completely in the in this preparation and all, then it will be helpful for you. But one day when you decided that no, the
judicial thing is not happening, there is something that is lacking, then you can shift your career to the litigation directly after 2-3 years. But not straight away. If you are thinking that no, you are the second generation lawyer, and I have a very set practice of my parents or father or anyone in the family, then for you, you can straight away go into the litigation. आपके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं होती है. आप जैसे ही कॉलेज से निकलते हो, आपके पास एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी प्रिपेयर किया जाता है, and you join it. And there are the third set of students who join a good senior. That is also very important, that initially you might not get that much of monetary this thing, but as far as the knowledge and experience is concerned, अगर आपको सिविल में प्रैक्टिस करना है, you join a civil lawyer. अगर आपको क्रिमिनल में प्रैक्टिस करना है, you join a criminal lawyer. And अगर आपको लगता है कि जी मुझे जो है कॉर्पोरेट के लॉ का करना है, तो there are many firms who basically do the corporate litigation. There is a difference. And I must tell you that people get confused and students get confused that what is a corporate litigation and what is corporate firms. So there are two different things. There are certain litigations where the corporate houses get involved into, and they come to court. That is the corporate litigation. And there are certain corporate firms which do the due diligence, there are other paperwork, that is the corporate firm. So that two things are different. You not get confused with these things. And there are other also career prospects that you should start looking for when you are in the third year, fifth, sixth semester of your college. And as far as my experience is concerned, I worked till 2015. I passed out in 2009. I worked 2015 completely independent as a lawyer. Then I was appointed as a additional standing counsel for the Delhi government, and now I am being appointed as a Deputy Advocate General for Punjab. So this only happens because I persisted. I remained in the profession. I did not get walked up by the peer pressure that my fellow student who passed with me, my colleague, getting much more salary than me, getting much more perks than me. Because in the litigation, it is initially it is not that lucrative. But if you persist, you can reach to a position that it is respectable only, because government being a government advocate, you have multiple things that today I can take care of it. There are the government litigations are quite interesting also, because there are the government policies are being made and that are being challenged in the courts of law. And also if you are a criminal lawyer representing a government, then you can a prosecutor. That is also a very interesting job, because you have to you have to not only the defend, but you have to prosecute a person who is being named in certain cases. So these are the different aspects of the litigation, and one should not feel fear of joining it, especially the girls. I take this opportunity to address all the students, all the girl students who have joined this today's webinar, that don't ever think that litigation is only for boys, that's not for the girls. No, it is not the case. It is a myth which has been created, because there are many I can name. I work with Rebecca Millington, I work with Chitra Jaising, I work with Nitya Ramakrishnan. There are many good names you can find that they have done remarkably good work in the field of litigation and in criminal law, in constitutional law, in other places as well. In Supreme Court also, I can see many lady advocates who is being appointed as a advocate general. So this thing that the litigation is not good for them, or it is not the field that they should choose, it's also a myth that needs to be clear. And yes, it starts very, the beginning is not that interesting. The beginning is not that lucrative, but the end is really going to, very not only by the monetary one, but also the kind of exposure that you are going to get. So I just want to put a questions session, question answer session, and just let the moderator
ask the questions from the students who have joined, put it before me, and any queries regarding this so that I can answer. Thank you so much, sir. I hope your ideas and views will help all the budding lawyers who are with us in this webinar. So now I would like to invite ASHU BIDHURI, sir, to speak on this occasion. थैंक यू। वैसे आज बड़ी खुशी का दिन है कि संविधान दिवस का मौका है। आप सभी लोगों को संविधान दिवस की बधाई। और मेरे लिए एक पर्सनल खुशी का दिन इसलिए है कि आज डॉक्टर परीक्षित सिरोही जिनसे मैंने 2 सेमेस्टर संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की क्लासेस ली, आज उन्हीं के साथ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू सर, आपने जो पढ़ाया उसका बड़ा हमारे ऊपर इम्पैक्ट है और वो एक लाइव लर्निंग थी जो हमें लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है और आज आपके साथ हम उस चीज को शेयर भी कर रहे हैं सर। ऑलवेज अ प्लेजर आशु, और बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज गुड कि स्टूडेंट्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती है और हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने व्यूज एक लार्जर ऑडियंस के साथ शेयर करने। वैसे सर आज का ये प्रोग्राम नेक मिशन फाउंडेशन और लॉ फैकल्टी के बच्चों ने मिलकर किया है। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के साथ बना हुआ, बाकी ये लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए बाकी मैं सर की ही कुछ बातों में से और कुछ अपनी लर्निंग में से अपनी चीजें आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली जैसे हमारा जो संविधान है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ पे उनमें से किसी चीज के लिए कोई कमी छोड़ी गई हो, जहाँ पे हम ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी कि जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट की जगह रही। हर चीज के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। कहीं अगर सेंटर स्टेट में कोई रिलेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके लिए भी प्रोविजंस हैं। जुडिशरी में किस तरीके का जो डिवीजन है उसके लिए भी सॉल्यूशंस हैं। और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और जो हमारी लेजिस्लेशन है उसके किस तरीके से अलग अलग रखा गया है उसके लिए भी है। हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन जैसा परीक्षित सर ने कहा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा अगर हम रेनकोट पहन के भी भीग रहे हैं तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि रेनकोट खराब है, प्रॉब्लम ये है कि रेनकोट को हमने ढंग से पहना नहीं है, उसको अच्छे से हमने जिस तरीके से उस प्रॉपर वे में उसको अप्लाई किया जाना था उसको प्रॉपर वे में हमें अप्लाई किया नहीं है। तो साथियों समझने की बात यह है कि हमें ये समझना है कि संविधान उस एक आदमी के अधिकारों की भी रक्षा करता है जिसको इसके बारे में नहीं पता है। अगर आप जाएंगे रूरल एरिया में, विलेजेस में, तो वहां पे लोगों को नहीं पता उनको किस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं, उनकी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। लेकिन हमारा संविधान उस एक व्यक्ति के अधिकारों की भी रक्षा करता है। हमारा संविधान उस हर व्यक्ति की भी रक्षा करता है जो कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से विक्टिम बन जाता है सरकार के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। तो हर तरीके के आदमी की रक्षा के लिए यहाँ पे प्रोविजंस हैं और हमें बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का जिन्होंने इस प्रकार के संविधान का निर्माण किया। उनकी एक कमेटी जो उनके साथ रही, उन कमेटी को उन्होंने हेड किया और एक ऐसा संविधान लाके हमें दिया जिससे कि हमारे देश को आगे बढ़ने में निरंतर हमारी जो लोकतंत्र है देश का वो निरंतर इसी संविधान से मजबूत होते चला जा रहा है। तो साथियों हमें समझना, आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमें ये समझना है कि किस प्रकार से वो संविधान जो एक रेनकोट की तरह हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है, किस तरीके से हम उसे सही ढंग से पहने, सभी लोगों को उसकी जानकारी दें। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है उन तक ये जानकारी पहुंचाएं कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते या एक यंग लॉयर होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम देश के अंतिम व्यक्ति तक कानून की जानकारी, संविधान की जानकारी, उसके अधिकारों की जानकारी पहुंचाएं। अगर उसको जानकारी होगी तो ये हमारे देश का लोकतंत्र और अधिक मजबूत होकर उभरेगा। हम एक मजबूत लोकतंत्र की तरह आगे बढ़ेंगे और एक मजबूत लोकतंत्र में ही हमारा विकास निहित है। ये बात हमें समझनी होगी और एक लॉ स्टूडेंट के तौर पर हमें अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों को समझ के आगे चलता रहना होगा। जहां तक एक परीक्षित सर ने पेंडेंसी ऑफ केसेस की एक बात की थी, उसमें सर मैं भी पिछले कुछ टाइम से प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जाना होता रहता है। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस में संविधान ने तो प्रोविजन कर दिया कि हमें किस प्रकार से अपने लिए जाके लड़ना है, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या किस तरीके से हम अपनी चीजें के लिए जा सकते हैं। लेकिन जहां दिक्कत आती है वो एग्जीक्यूटिव, उनके कोर्ट्स के पास सफिशिएंट स्टाफ नहीं है, एक ही अलमत है, एक ही रीडर है, उसके पास इतना पेंडेंसी है, जजेस के पास भी इतनी ज्यादा पेंडेंसी है। तो उनके लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है कि वो जो केस जो 2 साल में सॉल्व हो जाना चाहिए तो 5 साल 6 साल चल जाता है। तो वो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यू है। कोशिश हमेशा कोर्ट की रहती है, वहां पे आए हुए लिटिगेंट्स की रहती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स मिले, जल्दी उन्हें न्याय मिले, क्योंकि न्याय की जब देरी हो जाती है तो कई बार वो
न्याय ऐसा हो जाता है कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये बात हमें संविधान ने तो दिया है, लेकिन कभी हमें इसे एग्जीक्यूटिव के तौर पे एक लेके आना है, जिससे हमारे कोर्ट्स के ऊपर बर्डन कम हो, ज्यादा से ज्यादा स्टाफ उन्हें प्रोवाइड किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, जिससे जो न्याय जिसका प्रॉमिस हमारा संविधान करता है हम लोगों को, वो हर किसी को मिल पाए और एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। और एक दूसरी चीज है जो आजकल एक करंट चैलेंजेस के बारे में बात करनी है। अगर संविधान में जो करंट चैलेंजेस आ रहे हैं, मेजॉरिटी गवर्नमेंट और जो एजेंसीज का दुरुपयोग, जो जिस प्रकार की बातें कभी कभी देखने को आती हैं, सुनने में आती हैं, तो मेरे हिसाब से साथियों, मेरा जो मानना है वो ये है कि संविधान ने हमें इससे अपनी रक्षा करने के लिए टूल दिया है, और हमें संविधान से अपनी उस रक्षा कवच को निकाल के लेके आना है। मेजॉरिटी गवर्नमेंट होने का या एक बहुत ज्यादा बहुमत के साथ आई हुई सरकार होने का मतलब ये नहीं है कि वो संविधान को ओवरटर्न कर देंगे या वो संविधान में दिए हुए हमारे राइट्स को हमसे छीन लेंगे। अगर हम जागरूक नागरिक रहेंगे तो कोई कितनी भी बड़ी मेजॉरिटी से सरकार आ जाए, हमसे हमारे अधिकार नहीं छीन सकती। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो मेरे हिसाब से हमसे हमारे अधिकार छीने जा सकते हैं, और अपने अधिकारों की लड़ाई हमें लड़नी होती है। कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लोग जीत के आते हैं और सरकार को अपने कदम पीछे लेके जाने पड़ते हैं। सरकारें जो है वो लोगों के लिए काम करने के लिए बनी हुई हैं, और संविधान उन्हें ताकत देता है। तो मेरे हिसाब से हमें अपनी ताकत को पहचानना है। संविधान ने जो हमें ताकत दी है, उस ताकत को हमें पहचानना है, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को पहचानना है, लेकिन अपनी जो हमें ड्यूटीज दी गई, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो हमारे ऊपर जो उस संविधान ने हमें जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उनको भी हमें भूलना नहीं है। और हम तो वैसे भी लॉ स्टूडेंट या एडवोकेट्स हैं, तो हमारी ये प्राइम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों तक न्याय को पहुंचाएं, और जो हमारी ड्यूटीज हमें अलॉट की गई, क्योंकि जो आदमी अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करेगा वही अपने फंडामेंटल राइट्स को भी एक अच्छे नागरिक के तौर पे क्लेम कर पाएगा। राइट सभी के लिए, लेकिन ड्यूटीज आप अगर फॉलो करोगे तो आप देश के निर्माण में भी अपना योगदान दोगे, ऐसा मेरा मानना है। और हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसे कभी भी आपने देखा है, वक्त के साथ साथ उसने अपने आप को चेंज किया है, और इस प्रकार से चेंज किया है कि वो सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए निरंतर काम कर पाए। जो चीज जहां कहीं ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई पड़ता है, जहां कहीं कोई रुकावट महसूस होती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा उन चीजों को समय समय पर हमारी पार्लियामेंट के द्वारा चेंज किया जाता है, और हमारा जो संविधान है निरंतर आगे की तरफ बढ़ता रहता है, नागरिकों के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए। संविधान जो है हमारा हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को गाइड करता है, और अगर हमारा संविधान ना हो तो हमारे देश का जो कभी कभी कुछ निरंकुश शासक भी आ जाते हैं, और उसके एग्जाम्पल हमने पहले भी देखे हैं, और आगे भी ऐसा ना हो, इसके लिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम जागरूक रहें, एक नागरिक के तौर पे, एक एडवोकेट के तौर पे, एक लॉ स्टूडेंट के तौर पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर आगे बढ़ें, और इस देश के सिस्टम को, जो संविधान के वास्तविक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान जो हमें देना चाहता है, वो सभी तक पहुंचे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अपने वक्तव्य के अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमें कि संविधान हम तो जानते हैं, हो सकता है कम थोड़ा कम जानते हो, थोड़ा ज्यादा जानते हो, लेकिन ये नागरिक के बारे में सोचना है जिसको अपने अधिकार नहीं पता। हमें अगर कभी वक्त मिले, कभी मौका मिले एक एडवोकेट बनने के बाद, आप लोगों को उस आदमी के अधिकारों के लिए जरूर लड़ना है, जिसके पास वो टूल्स नहीं है वो लड़ पाए, जिसके पास वो मीडियम नहीं है, जिसके पास वो जानकारी नहीं। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, और इसी उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आप सभी को अगेन संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, sir. It was our immense pleasure to have all three eminent guests with us. We had a great discussion on various aspects on this National Constitution Day. So now we have a short questionnaire. I would like to first take up a question which has been asked to Dr. Parikshet Sirohi, sir, that only the appointment of two notable people from non-judicial backgrounds threaten the judicial system. ओके, थैंक यू स्निग्धा जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, नोटेबल की डेफिनेशन क्या है, एमिनेंट की डेफिनेशन क्या है, क्या ये एनजीसी में कहीं लिखी है? क्या ये जो जो अमेंडमेंट आया है 99 उसमें लिखी है? The answer is no. What is eminent for me may be completely non-eminent for you and vice versa. आपको पता है आज तक
पूरे विश्व में कितने आदमी टेररिज्म से मरे हैं? Huge, lakhs, crores. Has anybody ever been declared a terrorist? The answer is no. Because the United Nations does not have a definition of who a terrorist is. One man's terrorist, जिसको आप terrorist कहते हैं, उसको दूसरा आदमी freedom fighter कहता है. इंडिया में हम कहते हैं ये मौलाना मसूद अजहर is a terrorist. पाकिस्तान में वो कहते हैं freedom fighter. आज की सरकार में मिस्टर एक्स में बिकम एमिनेंट पर्सन, दूसरी सरकार आएगी मिस्टर वाई विल बिकम एमिनेंट पर्सन. एक और बहुत बड़ी विसंगति है जो इसमें सिस्टम में है कि एमिनेंट पर्सन शुड बी समबडी हु हैज नो नॉलेज ऑफ लॉ. इनके पीछे मंशा ये थी कि देखिए आपको लॉ के बारे में पता नहीं होगा तो आप जो है बाहरी आदमी है तो आप इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं पढ़े. बट डू यू रियलाइज कितनी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है? मैं कहता हूँ कुछ लोग हैं जो वाकई में बहुत एमिनेंट हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर बहुत एमिनेंट है, लता मंगेशकर बहुत एमिनेंट है, अमिताभ बच्चन बहुत एमिनेंट है, वर्गीस कुरियन बहुत एमिनेंट है, श्रीधरन बहुत एमिनेंट है. श्रीधरन बहुत एमिनेंट है मेट्रो में, रेलवेज में. वर्गीस कुरियन बहुत एमिनेंट है मिल्क प्रोडक्शन में. लता मंगेशकर बहुत एमिनेंट है गाना गाने में. सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बहुत एमिनेंट है और अमिताभ बच्चन फिल्म में बहुत एमिनेंट. इनमें से किसी को लॉ के बारे में जानकारी नहीं है. क्या ये वाकई में एमिनेंट है? आंसर इज यस. अब इन लोगों को अगर आप बना देंगे कि भाई चूज करिए कि जज कौन बनेगा, या इन लोगों को बना देंगे कि भाई जज का ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं, व्हाट डू यू थिंक दे विल डू? अगर मुझे बता दिया जाए कि आप कल से जाके फिजिक्स पढ़ाइए, व्हाट डू यू थिंक आई विल डू? मैं दूसरे से पूछूंगा भाई कैसे पढ़ाते हैं, मुझे तो नहीं आता वेक्टर क्या होता है, मुझे तो नहीं आता स्पीड ऑफ लाइट या वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है. सो मैं जो है आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म माय जॉब एंड आई विल बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स. जो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी कि भाई ये व्यक्ति जो जिसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये खुद तो कर ही नहीं सकता. दूसरा, ये जो कमिटी एमिनेंट चूज करेगी, देखिए आई डोंट वांट टू से टू मच, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स को थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम अलग अलग रखने की, बट कई बार इसमें नहीं वो किया जा सकता. बिकॉज अगर आप देखेंगे पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस का जो अभी तक 75 साल में इंडिया में और बाहर के कंट्रीज में भी एक्सपीरियंस रहा है, पॉलिटिशियंस विल अपोज ईच अदर व्हाइल इन पॉलिटिक्स, बट अल्टीमेटली ये सब दोस्त हो जाते हैं, एक तेरा एक मेरा. सो the committee of 3 persons which is selecting the 2 eminent persons comprises the Prime Minister, Leader of Opposition and Chief Justice. So it is possible that the Prime Minister and the Leader of Opposition may get together and choose the person as eminent person. So the eminent person per se is being given so much of power over and above the 3 experts in judiciary. That is the problem. So this is the problem with the eminent person. Now, yes, nepotism does become a problem. In fact, judges of the Supreme Court, sitting judges, have called this practice of collegium to be incestuous. कि आप उसी में से अपॉइंट करते रहते हैं, आप खुद अपने ही अपॉइंट करते रहते हैं. देखिए, this system is not perfect, but it is a reaction to what has happened in the 70s and 80s by the then government, which was a majoritarian government. और यकीन मानिए अगर आज की डेट में कलीजियम नहीं होता तो आज भी वही हो रहा होता. और जैसा कि आप में से किसी एक ने कहा है, वर्तमान लॉ मिनिस्टर पब्लिक में बोल चुके हैं कि हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव को वापस वही पावर मिले जो पहले थी, ये कलीजियम का सिस्टम खत्म करें. सो these are the certain things. और इसकी वजह से you find, जैसे कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, forward looking judges, looking forward judges. There are judges who know the law, judges who know the law. So इस तरह की चीजें जो है, yes, and you are absolutely right कशिश, अगर कोई बंदा लॉ बैकग्राउंड से नहीं होगा तो the constitution and the ability to make justice will definitely, the wrong person being selected as a judge for higher judiciary can be absolutely disastrous. गलत आदमी अगर सेलेक्ट हो जाए. I hope I have been able to shed some light on this. Yes, sir.
So, sir, I have one more question for you, which has been asked. When judicial activism goes overboard, it results in judicial overreach. So, how to tackle with such situation? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जुडिशियल एक्टिविज्म, ये 3-4 कंसेप्ट्स हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एडवेंचरिज्म, जुडिशियल रोमांटिसिज्म। देखिए, न्यायपालिका को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, बट देयर आर सर्टेन टाइम्स दैट आपको बाहर भी आना पड़ता है, और यू हैव टू क्रॉस द लक्ष्मण रेखा। फॉर एग्जांपल, had the Supreme Court of India not stepped in, he would have destroyed the Taj Mahal by now, by pollution. Had the Supreme Court of India not stepped in, he would have killed Delhi by now, because of winter pollution, because of diesel pollution. So entire public transport was converted to CNG in 2000. Now again the same problem, because we are now using harvester combines in Punjab and Haryana. So winter pollution in Delhi is a big problem. So Supreme Court keeps stepping. Had the Supreme Court not stepped in, Punjab and Haryana will keep fighting over the Yamuna water. So had the Supreme Court not stepped in, we would have polluted all our resources, land, water, everything would have been polluted. So especially in all these areas, especially when what is called MC Mehta jurisprudence or public trust jurisprudence, and so the Supreme Court may have to assume an activist role. Even in the US, the court under Chief Justice Roberts has been an activist court. Activism तक तो ठीक है। अब जो आपने बात कही एडवेंचरिज्म, या जो आपने बात कही that the court starts making law, that is very dangerous. न्यायपालिका अगर अपनी मर्यादा भूल जाए और बाहर आ जाए और सारे लॉ बनाने लगे और पॉलिसी इश्यूज में जाने लगे, तो वो एडवेंचरिज्म हो जाएगा, वो ओवररीच हो जाएगा, वो बहुत ही गलत हो। A judge's idea of justice should be, किताब में जो लिखा है उसको मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। अपने दिमाग से जज लॉ नहीं बना सकता। जो किताब में लिखा ही नहीं है उसको आप रीड नहीं कर सकते। एक कंप्लीटली अलग पैरेलल पे चलती है। भाई मुझे लगता है कि गाड़ी जो है आपको सड़क पे लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड चलानी चाहिए, वो मुझे लगता है। किताब में क्या लिखा है? अगर किताब साइलेंट है तो आप जरूर इंटरप्रेट कर दीजिए अपने हिसाब से, बट अगर किताब में लिखा है लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलानी चाहिए, मैं नहीं कह सकता कि राइट साइड। सो जुडिशियल एक्टिविज्म तक तो आप शायद ठीक है, बट जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल रोमांटिसिज्म, जुडिशियल एडवेंचरिज्म बिल्कुल ही गलत है। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू कैन नॉट गो अहेड एंड any further questions, Snigdha? No, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Excellent. So I have a question for Advocate ASHU BIDHURI, sir, which is a very common question to everyone. Every budding lawyer has in his mind or her mind. Like we all have seen nepotism in lawyers, in law chambers. So all of us want to just have this thing. देखिए, नेपोटिज्म जो आप बात कर रहे हैं वो तो खैर सिर्फ लॉ में नहीं, आपको हर प्रोफेशन में मिल सकता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मैं अगर आपको अपने ही एग्जांपल से लेके चलूं, मेरे भी कोई भी रिलेटिव या नियर और डियर कोई भी आज तक एडवोकेट नहीं है। मैं अपनी फैमिली और नियर और डियर में पहला एडवोकेट। तो अगर आप स्ट्रगल अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आपके पास पेशेंस है और आप इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पास आप ये अल्टरनेट नहीं सोच रहे हैं, जैसा अभी ऋषि सर बोल रहे थे कि आप पैरेलली नहीं सोच रहे हैं कि मैं एडवोकेसी भी करूंगा, मैं जुडिशरी भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। अगर आप इतना कंफ्यूज नहीं है और आप फोकस्ड है फुल्ली कि मुझे एडवोकेसी करनी है, मैं स्ट्रगल के लिए तैयार हूँ, तो मेरे हिसाब से 2 या 3 साल का तो स्ट्रगल है। आप बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं कर सकते। 2 से 3 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिर्फ हम बुक से पढ़ लेते हैं उससे हमारी एडवोकेसी नहीं चलने वाली है। 2 से 3 साल हमें कोर्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स लर्न करने होते हैं। कोर्ट आके देखना पड़ता है कि यहाँ प्रोसीजर क्या है, हमें हर प्रोसीजर को एक एक करके समझना होगा। एवरीडे कोई न्यू चैलेंज हमारे सामने आएगा। तो नेपोटिज्म को तो देखो हम हटा नहीं सकते, वो तो ओवर द टाइम अभी तक ना पॉलिटिक्स से हटा है, ना ही आप देखेंगे किसी भी बिजनेस उससे हटा है, कहीं से भी हटा नहीं है। लेकिन अपने आप को एम्पावर करके हम खुद को उस कैटेगरी में ला सकते हैं जहां हमें नेपोटिज्म जैसी समस्या रोक ना सके।
सिर्फ और आशु, I would just like to add to this point जो आप बता रहे हैं. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं that nepotism is not completely removed. Now see, as we are making the transition, हम लोग आज की डेट में इंडिया भारत एक ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम अ फ्यूडल सोसाइटी टू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी. हमको आजाद हुए मात्र 75 साल. ये हम ट्रांजिशन जब तक करेंगे इस तरह की समस्याएं रही, सब जगह ही रही हैं, यूरोप में भी रही हैं, यूएस में भी रही हैं. जहां हम आज हैं वहां ये देश 200-300 साल पहले. तो ये समस्याएं रहेंगी. धीरे धीरे आप देखेंगे आज की डेट में, क्योंकि आप लोग यहाँ हैं, आपने पहले का नहीं देखा, ये समस्याएं पहले से आज की डेट में काफी कम है. मैंने खुद अपने जीवन काल में देखा है, ये समस्याएं पहले से काफी कम होती जा रही है. यस सर, आज अगर हम देखेंगे तो काफी स्टार्टअप्स भी हम देख सकते हैं, काफी यंग लॉयर्स भी जो हैं जो आगे आ रहे हैं. इवन यंग पॉलिटिशियंस भी आप देख रहे हैं जो जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, किसी भी तरीके का नहीं था. तो नेपोटिज्म को सर मेरा ये मानना है, हम you look at the political party which is in power in 2 states, Delhi and Punjab. Nobody has ever been in politics before. They are all first timers. So Yes, if sir. one political party within 10 years can come up and rule 2 major states, then obviously things are changing. बिल्कुल सर, और अगर कोई भी अपने क्षेत्र में ईमानदारी से मेहनत करेगा तो कोई भी नेपोटिज्म या कोई भी बीमारी उसको रोक नहीं सकती. ये मेरा मानना है. If you permit, there are a couple of questions जो मैं देख रहा था, अभी स्टूडेंट्स के आए हैं, अटेंडीज के आए हैं. मैं उनका जल्दी से संक्षिप्त में जवाब देना चाहूंगा. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सवाल है और एक ये सवाल इनका आया है, दीक्षा जी का 2 बार आया है, पीस और जस्टिस की बात हुई. तो मैं दोनों के थोड़ा सा संक्षिप्त में जवाब दे देता हूँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे लीगल सिस्टम में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द पास्ट इन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करने में मदद की है, शॉर्ट स्टोरीज, सॉन्ग्स लिखे हैं, डिजीजेस को डायग्नोज किया है, हैंडीकैप लोगों की मदद की है, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर बना दिया, वायरलेस ट्रांसमिशन किया, इस तरह की चीजें की हैं. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वगैरह से जो भी टास्क रिपीटेडली हमें करना होता है उसमें एआई के you just train a historical set of precedents, क्योंकि लॉ में प्रेसिडेंट बहुत जरूरी होता है. So the applications are capable of highlighting your key points. मतलब ये मानवपत्रा वगैरह जिस तरह से काम करते हैं वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से कर सकते हैं. इससे आप जज एनालिटिक्स बना सकते हैं. बहुत सारी ऐसी देशों में ये काम हो रहा है. चाइना, मेक्सिको, रशिया वगैरह में तो काफी मतलब ये जजमेंट्स लिखने के लिए भी इसको यूज करने लगे हैं. यूके में एक हार्ट करके है, HART, हार्म असेसमेंट. यूएस में कंपस करके है, COMPAS. मलेशिया में है, ऑस्ट्रिया में है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, कोलंबिया वगैरह, वहां पे यूज हो रहा है. सिंगापुर में ट्रांसक्रिप्शन इज हैपनिंग. जो डिसीजन जो भी जज बोल रहा है स्टेनो नहीं नोट करता, वो इमीडिएटली रियल टाइम में वो नोट होता है, फिर बन जाता है. सो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में 2-3 चीजें यूज की हैं. वर्चुअल हियरिंग्स हैव बीन यूज्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 और उससे अब काफी फर्क पड़ गया है. एक सुवास करके सॉफ्टवेयर आया है, SUBAS, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर. AI सिस्टम है, ट्रांसलेशन फटाफट हो जाता है, अच्छा ट्रांसलेशन होता है. वैसा मतलब नियर बेटर देन आई वुड से गूगल ट्रांसलेशन. गूगल ट्रांसलेशन में हश पपीज बिकम्स क्विक. सो वो ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलिटरेशन होता है. ये जो है सुवास थोड़ा सा उससे बेहतर है, काफी बेहतर है. एक सुपेस करके है, SUPACE, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल ऑन समथिंग, कोर्ट एफिकेसी ऐसा करके नाम है. ये जो है यूज कर रहा है AI को. तो AI से आप काफी जो है यूज कर सकते हैं. इससे आप अपना जुडिशियल प्रॉब्लम्स को काफी सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मान्यता है. और इसलिए इस पे काफी रिसर्च चल रही है देश में. हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी काफी इसमें काम कर रहा है, IIT खड़गपुर में काफी काम हो रहा है, IIT मद्रास में काम हो रहा है, एंड सो ऑन. जुडिशरी में बहुत स्कोप है, स्पेशली हमारे जैसे देशों में जिनका प्रेसिडेंट बेस्ड सिस्टम है, कॉमन लॉ सिस्टम. सिविल लॉ कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी वगैरह में इसका स्कोप शायद उतना ना हो, बट यहाँ पे ज्यादा स्कोप. पीस एंड जस्टिस. नाउ देखिए, पीस आपका तभी होगा जब आपकी सोसाइटी में जस्टिस. अगर सोसाइटी में लोगों को ये लगता है कि यहाँ जस्टिस नहीं, तो पीस.
अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा है, देश बहुत अच्छे से प्रगति कर रहा है, बट जो है some people are getting left behind, so there will be no peace. आपके घर में अगर 4 आदमी हैं और एक आदमी की नौकरी लग गई और दूसरे आदमी की नौकरी चली गई, there will be no peace in the house. You will have to come up with some kind of justice. You will have to come up with justice. The father will have to make a mechanism कि ओके भाई, हमारे पास नौकरी नहीं है, तुम जो है खर्चे के पैसे मत, तुम्हारे पास नौकरी है ना, तुम थोड़े ज्यादा पैसे दे दो, तुम्हारे भाई की नौकरी नहीं. And that arrangement may have to be revisited after 6 months when the other fellow also gets it. So otherwise, अगर ये father इस तरह का as head of the family system नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम आगे जा. एक बंदा कहेगा जी मैं इसके खर्चे के पैसे नहीं, दूसरा बंदा कहेगा मैं घर छोड़ के जा. ये आपकी प्रॉब्लम. So peace and justice feed off each other. Justice होगा तो peace होगा, peace होगा तो justice. Chicken and egg situation. Peace नहीं होगा तो justice देना आपको बहुत मुश्किल. और आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जुडिशियल डॉकेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आई एम सॉरी टू से, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एंटायर जस्टिस सिस्टम इज ब्रोकन डाउन. क्रिमिनल्स को कोई डर ही नहीं, क्योंकि उनको पता है 30 साल तो मैटर चलेगा, लोअर कोर्ट में 30 साल चलेगा, फिर हम अपील में जाएंगे, तब तक हम बुद्धे हो जाएंगे, फिर कोर्ट कह देगी कि जी अब तो ये 60 साल का हो गया, इसको जेल भेज के. So these are the certain things. The fear of the law must be there, and the laws must be in such a way that they are there for justice. Yeah. That is what I wanted to say. Sir, so we have just the last question. How judicial adventurism becomes dangerous? Now, judicial adventurism becomes very, very dangerous. इसका फिर कोई अंत नहीं बचता. मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ जो जब हम लोग स्टूडेंट थे, ये बहुत टॉपिकल इशू. You can go and check up also. Obviously, आपको जज का नाम नहीं बोलूँगा. Now see what has happened. Judges are their salary, their perks, their this thing. It is all coming out of the charge expenditure. Means expenditure which is coming out of consolidated fund of India or consolidated fund of the states. चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि इस पे पार्लियामेंट में या विधानसभा में कोई बहस नहीं कि भाई जज की सैलरी इतनी क्यों है, इसको कम क्यों नहीं कर सकते, इसकी पर्क्स को कम कर दो, एक्सेट्रा. ये सब इसलिए बनाया गया है ताकि जो है जजेस के पास दे आर एबल टू do their work in full freedom. They are also guaranteed certain facilities. So, for example, if a judge is traveling somewhere on work or on personal visit, आप उसको जो है प्लेन में, ट्रेन में एक अलग से कोटा रखिए, VIP कोटा उनको दे दीजिए. Now, there was an incident, friends, in the early 2000s, 2001 or 2000 or something. There was a judge of the Allahabad High Court. He had come to Delhi to attend a wedding. Now, his office gave the requisition for VIP quota to the railways, the divisional railway manager of Delhi and the general manager of Northern Railways at very short notice. The quota for that day had already been released. उस जमाने में आज भी शायद ऐसे ही होगा. कोटा का रूल इज दैट 4 घंटे पहले, सो अगर ट्रेन जो है शाम को जा रही है, it is going after 5 p.m. the quota will be released at 5 p.m. If it is going between 12 and 5 p.m. it will be released at 12 noon. That is the scheduled time, not actual time, scheduled time. Now this train was leaving at night, I think 9 p.m. or 10 p.m. from Delhi to Allahabad. Very, very sought after train in those days. I think even now it is a very sought after train. उसमें reservation नहीं है. Prayagraj Express. So his office sent a requisition at 6 p.m. to the divisional railway manager's office by fax. Now this office tried to get various reservations. The DRM himself called him up and he said, "Look, sir, इसमें तो नहीं मिल रहा." Called up the judges staff and said, "इसमें नहीं मिल रहा. मैं दूसरी ट्रेन में करा देता हूँ. मैं जो है इसी ट्रेन में फर्स्ट AC की जगह सेकंड AC करा देता हूँ. दूसरी ट्रेन है इसके आधे घंटे बाद जा रही है, उसमें करा देता हूँ. मैं कल सुबह की ट्रेन में करा देता हूँ." Various options were given. Anyhow, this man did not accept. At the appointed time, when this train was supposed to leave, this man came to the court along with his wife, along with his luggage, along with the court staff.
He was, mind you, he had come to Delhi for a private work, not some official work. He had come to take part in a wedding. You know what he has done? He is, when he has not got the seat, उसको पहले ही बता दिया गया था, देखिए आपको सीट नहीं मिल पाई है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वीआईपी कोटा का रिक्वेशन आया था, वो फलाने फलाने आदमी को दे दिया। अच्छा, कोई और कोई होता तो उसको हटा के इसको भी दे देते, ऐसा भी करते थे, बट वो जो दूसरा आदमी था वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वहां हटाएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, भाई दे दिया वापस कैसे ले, छोटा मोटा आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सो what he has done is he has asked the station master to bring a gavel and a table, and on a crowded platform he has held court, and he has sentenced the station master, he has sentenced the DRM and all the officers of the railway नीचे से ऊपर तक for contempt of court। ऐसे ही कुछ यूपी में हुआ है, ऐसे ही कुछ बिहार में हुआ है। केशव सिंह वाला केस आप लोगों ने शायद सुना होगा। ये यूपी में जो है some journalists had written, बिहार में some journalists had written about proceedings in the house. The privilege committee says आपने जो है ये कैसे लिख दिया, असेंबली का privilege violate हो गया, जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर दिया। The journalist goes to the Allahabad High Court. The Allahabad High Court stays the order of arrest. You know what the privilege committee has done? So the privilege committee has said arrest the two judges, arrest the lawyer, and arrest the person, the journalist. In the second case, the assembly has gone overboard, and in the first case, the railway station case, the judiciary has gone overboard. When anybody goes overboard, it becomes adventurism, and adventurism will become extremely dangerous. Like I said, these kind of problems will happen. If you are, आप अपने घर में कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, no problem. आप सड़क पे आके एक्सरसाइज करेंगे तो किसी और का राइट वायलेट। आपको म्यूजिक सुनना है, आप सुनिए, नो प्रॉब्लम। आप जोर जोर से बजाएंगे म्यूजिक रात को 10 बजे के बाद, तो सामने वाले को प्रॉब्लम होगी, वो सो नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, राइट? सो दीज आर थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। आपकी जो काम है वो आप करिए, बट डोंट गो ओवर। You know, so these are the disadvantages of when you become when you take activism too far, when you go into adventurism, when you go into romanticism. Romanticism means आपका अपना जो आइडिया है, यहाँ पे गुलाब का फूल लगना चाहिए, अरे जो लगना चाहिए भाई गुलाब का, वो एग्जीक्यूटिव का काम, वो सरकार का काम, पॉलिसी का इशू। So these are the things which have to be taken. Thank you so much, sir. I hope now everyone has got their answers who have asked. Now we think we don't have any questions yet. Thank you so much, sir, for this. Now I would like to invite for the vote of thanks Mr. Anjul Chaudhary, Executive Director of Nek Foundation. Am I audible? Thank you, Singh. Good evening, everyone. Respected Advocate Rishikesh Kumar sir, Professor Dr.Parikshet Sirohi sir, Advocate ASHU BIDHURI sir, Shri Dinesh Chand Meena ji, Shri Rishabh ji, member of Sankhyiki Society and member of the Nek Mission Foundation. I would like to consider it a privilege to propose a vote of thanks to our guests who made it convenient to attend this webinar. I must express my gratitude to our Advocate Rishikesh Kumar sir for giving us a time from his very busy schedule. I like to thank you, Dr. Parikshet Sirohi sir, for giving us such a wonderful and knowledgeable lecture on the occasion of Constitution Day. I would like to thank you, Mr. Advocate ASHU BIDHURI sir, for giving us insight of the law field and always available for us in every aspect of when we need them. सर, तो आज संविधान दिवस के मौके पर नेक मिशन फाउंडेशन के लिए एक बहुत ही खुशी का वो है बात जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज संविधान दिवस के मौके पर नेक मिशन फाउंडेशन ने 30 हजारी कोर्ट के प्रीमिसेस में अपनी लीगल विंग की स्थापना की है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट सेक्शन के तहत और अन्य काफी सारे प्रोजेक्ट के तहत नेक मिशन फाउंडेशन
हमेशा से लीगल एड और फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराने के लिए तत्पर रहा है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए इस लीगल विंग की स्थापना की गई है, जिसमें कि कोई भी जरूरतमंद लोग 30,000